जी नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म, आपके चैनल पर। डॉक्टर जेके तिवारी हियर, द न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर। जी दिव्यांशी, अनुपम धुरिया, धर्मपाल, रिंकी, जितने भी लोग ज्वाइन कर लिए सभी को शाम वाली राम राम, सभी को गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म। फटाफट जुड़ जाइए, दोस्तों को बुला लीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल, लाइक कर दीजिए चैनल, एंड देन आई स्टार्ट योर टुडेज क्वेश्चन आयर। EMRS की डेट्स आ गई हैं एंड जिसने भी फॉर्म भरा है उनको सबको सूचना मिल गई है, जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा है उनको भी सूचना मिल गई है। 16-17 दिसंबर एंड देन 23rd 24th दिसंबर, ये 4 डेट्स है। आपकी डेट कब है पता नहीं, बट ये मान करके कि ओनली 25 डेज आर लेफ्ट। टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस on EMRS, exclusively for EMRS. The syllabus of EMRS and the syllabus of NVS are same. Writers जो EMRS में है, जो NVS में है, these writers are in UP TGT, UP PGT. They are in set examination. They are for net examination as well. Right? So there will be questions and questions on various writers, right? 25 days you will cover more than 50 writers and more than 1000 MCQs on various writers, history, literary terms, figures of speech, right? All the things related to literature you will be covering through these 24 or 25 days. And in the 25 days, it is the first day. Today is the first day when you are going to start your question answer session. Day 1, and for 25 days you will have continuous classes without interruption, without break, a sort of marathon, right? A sort of marathon you are going to have from today onwards. So ये न कहिएगा कि सर क्लास कब ओपन, क्लास कब खत्म होने वाली है। जी फिरोज, सुबोध, प्रियंका, हेमलता, बुशरा, जितने भी ज्वाइन कर लिए सभी को शाम वाली राम राम है। किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी शेयर करना हो, फीडबैक देना हो, यू कुड रेज योर क्वेरी, यू कुड रेज योर क्वेश्चन एंड देन आई शैल स्टार्ट। जी रीता राज नमस्ते, रंजना मौर्य जी को भी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नीरज कुमार जी को भी प्रणाम, बहुत दिनों के बाद आज चैनल पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चनायर को, आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। एंड एज यू नो दैट टुडेज राइटर इज नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। टुडेज राइटर इज नन अदर देन विलियम शेक्सपियर एंड आई होप यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस राइटर, राइट? कोई भी शेक्सपियर से जहां पीछे नहीं है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर शेक्सपियर पूछे ना जाए। Starting from TGT to higher education, UPHEC, RPSC, NET examination, everywhere Shakespeare is omnipresent. Shakespeare is omnipresent. He is ubiquitous. He is everywhere. No exam is possible without William Shakespeare. So today's question answer session is totally based on William Shakespeare. And most probably this is part 1 on William Shakespeare. पार्ट 2 किसी और दिन या कल ही हो सकता है। तो चाहे जिस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में है, शेयर कर लीजिए चैनल, फटाफट जोड़ दीजिए लोगों को एंड देन शुरू करते हैं क्लास। जी नाज कुरैशी, अभिषेक, अजय मिश्रा, प्रतिभा, राजेंद्र प्रसाद, सभी को गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू किया जाए विदाउट एनी डिले। कुछ पूछना है विदाउट एनी डिले। जी ज्योति कनौजिया, very good evening, how are you? Chali, let's start today's session, right? Everything is clear. EMRS PGT English, William Shakespeare, 25 days, 50 writers, 1000 plus MCQs, and you can share your channel and you can join through the new Lyceum for English Literature, and this is the Telegram channel, right? You could click here to join your platform. And now this is the syllabus of EMRS.
लिटरेचर का सिलेबस यही है। हियर यू कुड सी द नेम्स ऑफ द राइटर्स। शेक्सपियर्स वर्क्स मींस शेक्सपियर की बायोग्राफी नहीं, शेक्सपियर के वर्क्स हैं। एंड देन रोमांटिक पीरियड, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, एंड देन 19th century American and English literature, Easy, Robert Frost, Hemingway, Whitman, Hawthorne, Emily Dickinson, Bernard Shaw, Arthur Miller, and etc. etc is not one writer, but etc means dozens of writers. And then modern Indian writing in English. And in modern Indian writing in English, you have Anita Desai, Vikram Seth, Nazim Ijkal, K.K. Andharuwala, Ruskin Bond, R.K. Narayan, Mulk Raj Anand, Khushwant Singh. Modern writing in English from the other parts of the world like Latin America, Africa, Australia, South Asia. ये syllabus है. Means here you will have questions from Nobel writer, Nobel winners, from Booker winners, from Pulitzer Prize winners, or from other literary award winner writers. Right? सबको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, सबको करना है बिना कुछ छोड़े हुए. राइट, चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से आपके प्रैक्टिस सेशन को, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन को. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट दैट इज हियर इज ऑन योर स्क्रीन. हेमलता कह रही हैं सर ERA लिटरेचर का सिलेबस पूरा अब कंप्लीट करो या प्रैक्टिस करूं, प्लीज सजेस्ट. देखिए प्रैक्टिस के लिए यू कैन ज्वाइन मी, बट इन द रिमेनिंग टाइम जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिलेबस में जो बाकी है आप उसको कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं. चलिए, रेडीनेस इज ऑल. रेडीनेस इज ऑल इज लाइन फ्रॉम which play? Readiness is all is a line from which play? King Lear, Hamlet, Macbeth, or Julius Caesar? These are the four options. कहां से ली गई है लाइन readiness is all? Readiness is all is a line taken from which play? सर योर वीडियो इज नॉट प्लेइंग. वीडियो नहीं चल रहा है. ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एक बार कंफर्म करिएगा. somebody is complaining that video is not running properly. राइट, जस्ट ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एक बार कंफर्म करिएगा. आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड लेट मी चेक इट ऑन माय मोबाइल कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है. रेडीनेस इज ऑल इज द लाइन टेकन फ्रॉम द प्ले हैमलेट. हैमलेट की लाइन है रेडीनेस इज ऑल. राइट, हैमलेट की लाइन है रेडीनेस इज ऑल. कुछ लोगों ने ए और कुछ लोगों ने सी भी आंसर किया है एंड ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट हियर. राइट, रेडीनेस इज ऑल इज फॉर हैमलेट. हैमलेट इज द कैरेक्टर हु इज मोस्ट अनरेडी. जो खुद ही अनरेडी होता है, जो खुद ही रेडी नहीं होता कभी, वो बोलता है रेडीनेस इज ऑल. राइट, सो इट मीन्स द लाइन readiness is all occurs in the play Hamlet. First question का आंसर बी है. ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर. अजय, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पांस. जी रंकी, थैंक यू. अभिषेक जी को भी गुड इवनिंग, रवि पूजा को भी गुड इवनिंग है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, readiness is all occurs in play Hamlet. All right, now second question. A.C. Bradley. A.C. Bradley, Andrew Cecil Bradley was his full name, and he was a Shakespearean scholar. He was a Shakespearean critic, and he criticized Shakespeare's plays, not plays in fact, but individual criticism इन्होंने किया है Hamlet, Macbeth, Othello, and King Lear का. And he wrote the book Shakespearean Tragedy, that is called Shakespearean Tragedy. And the question is, when was the book published? Right, Andrew Cecil Bradley. There are total 10 chapters in the book. 8 chapters are on 4 plays, 2 chapters on each tragedies,
Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth respectively, and one is the preface in the form of preface, and the last one is in the form of conclusion. So there are total 10 chapters. Andrew Cecil Bradley is the writer, and the book was published in 1904. Right, the book was published in 1904. Right answer to the question is B. 1904 में पब्लिश हुई थी। जी मौसमी जी, आपको भी नमस्ते। The book was published in 1904. A.C. Bradley's, right, 10 chapters, 4 chapters, alright, on 4 plays: Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. 2 chapters on each plays. Right, 2 chapters on each play. Alright, next question, that is question number 3. Thomas and Henrietta Bowdler. Bowdler's edition of the family Shakespeare gave rise to the word Bowdlerize. Bowdlerize. What does it mean? What is the meaning of the term Bowdlerize? Thomas Bowdler and Henrietta Bowdler were siblings. They were brother and sister, and they had edited Shakespeare's plays. Right? They had edited Shakespeare's plays under the title The Family Shakespeare. Family Shakespeare उसका नाम रखा था, and Family Shakespeare means they had deleted the abusive, delicate, sensitive language, right, from Shakespeare's plays, so that his plays could be read out with the members of the family. इसलिए उसका नाम Family Shakespeare है, and Family Shakespeare was published in 1807. Family Shakespeare was published in 1807, and the question is, from Bowdler we have a term Bowdlerize. What is the meaning of the term Bowdlerize? The meaning of the term is the expurgation of indelicate language. Indelicate language, language that was not proper, उसको एक्सपर्गेट कर दिया था, उसको हटा दिया था, उसको निकाल दिया था। यही काम फैमिली शेक्सपियर में किया था। तो जब आज हम बोलते हैं कि नूरी खान वांट्स टू बाउल्डराइज दिस टेक्स्ट, इट मींस शी वांट्स टू एडिट द टेक्स्ट, शी वांट्स टू एक्सक्लूड द इनडेलिकेट लैंग्वेज फ्रॉम द टेक्स्ट। ऑलराइट, ये उसका पूरा सेंस है, ये उसका पूरा मतलब है बाउल्डराइज का। ऑलराइट, क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? ये बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग इतना शेक्सपियर पढ़ चुके हो ना, इतना शेक्सपियर पढ़ चुके हो कि you are not going to miss any question on शेक्सपियर। कोई भी क्वेश्चन आपका शेक्सपियर पर कम से कम गलत नहीं होने जा रहा है। You are expert, right? You are expert in Shakespeare. Next question. Who among Shakespeare's contemporaries did not write tragedies? Who among Shakespeare's contemporaries did not write tragedies? Thomas Kidd, John Lilly, Christopher Marlowe, or Ben Jonson. 4 options are given. Who was not a tragedian? Z. Agam Royal ji, good evening. Who was not a tragedian? Do you know that Ben Jonson wrote tragedies as well as comedies? He wrote tragedies as well as comedies. कई सारी tragedies हैं Ben Jonson की. Though he is better known for his comedy of humors, but he is not less known for his tragedies. He wrote both. Christopher Marlowe didn't write comedies, he wrote exclusively tragedies. And Thomas Kidd is known for his The Spanish Tragedy,
The name of the title is tragedy, and it was John Lilly, right? It was John Lilly who never wrote tragedies, right? Who never wrote tragedies. He basically wrote prose and comedies. John Lilly did not write tragedies. This is the answer B, right? Though a few of you have clicked on answer D, but इसको याद रखिएगा कि लिली जो है वो ट्रेजेडियन नहीं थे. He wrote comedies and then he wrote prose, right? Prose के लिए जाने जाते हैं, euphemism के लिए जाने जाते हैं. He wrote the book Euphues and his England, right? This was the book, right? So right answer to the question is B here. All right. जी कविता नमस्ते. Proceed करें. Any doubt? And Thomas Kidd, Lilly, Christopher Marlowe, they were considered to be the university wits, and Ben Jonson is odd one out. जी मानसी नमस्ते. Next question. Question number 5. Which of the following best describes Lady Macbeth's death? Which of the following best describes Lady Macbeth's death? How did Lady Macbeth die? And you know that Lady Macbeth को क्या बीमारी हो गई थी? Lady Macbeth was suffering from which disease? Sleepwalking, जिसको आप कहते हो. She was suffering from sleepwalking, somnambulation, right? Somnambulation से सफर कर रही थी वो, and she had the guilt consciousness, और वो कहती है all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. First, she was a catalyst, right? She was a catalyst. She provoked Macbeth to kill Duncan instantly, and once Duncan was killed, she lost her mind and she started walking during her sleep. And in the fifth act, we come to know that Lady Macbeth has died. How did she die? We do not know, because she doesn't die on stage, but she died off stage. Off stage उसकी death होती है. So right answer is D. Right answer is D. Now question number 6. The banished duke who has been living in the forest of Arden is reunited with his daughter at the end of the play. If there be truth in sight, you are my daughter. This is the line spoken by whom? This is the line spoken by the Duke, right? Name of the Duke, Duke Senior. The play As You Like It, right? What is the name of the daughter? This is the question. What was the name of the daughter? Celia was the daughter of Duke Frederick. Rosalind was the daughter of Duke Senior. Miranda appears. Miranda was also the daughter, but she was the daughter of Duke Prospero in the play The Tempest. And Lady Macbeth is the heroine of the play Macbeth. And here the name of the daughter is Rosalind. And the name of the play is As You Like It. As You Like It is famous for many things. किस किस के लिए फेमस है? As You Like It is known as a pastoral comedy. Right? As You Like It is known as a pastoral comedy. Point number 1. And As You Like It is known for its songs. And especially it is known for Shakespeare's 7 Ages of Life. It is known for 7 Ages of Life. And fourth one, the play is known for maximum use of prose, right? And here in this play, Shakespeare made a clear-cut demarcation between the aristocratic people and common people.
aristocratic people spoke in blank verse and common people spoke in prose. So there are 55% prose in the play As You Like It. Right? Jack is the mouthpiece of William Shakespeare. All this world is stage and we are merely players. We have our exit and entrances. Our life being in 7 stages. ये जो फिलॉसफी है वो शेक्सपियर की है, वो इसी एज यू लाइक इट में आती है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Shakespearean plays is in the correct chronological order? क्रोनोलॉजी आपको बनानी है. King Lear, Hamlet, Much Ado About Nothing, Troilus and Cressida. These are the 4 plays and which one is chronologically correct? किसकी chronology correct है? Which was written first and which was written later? Come on. जी, अजय मिश्रा, कविता, रजनी, श्वेता, रीता, शाबाश. सुबोध कुमार, फटाफट आंसर करिए, फटाफट. नीरज, सपना, आरती, प्रतिभा, नूरी, सारिका, शाबाश. फिरोज, सबका आंसर सही है ना? जैसे अभी मैं बता दूंगा कि ये आंसर नहीं है, सबसे पहले आंसर कौन बदलेगा? सबसे पहले आंसर कौन बदलेगा बताइए? प्रियंका शर्मा. फर्स्ट तो नहीं है ना? नहीं है, क्योंकि इतनी बात तो पता है कि जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है उसमें हैमलेट पहले आता है, ओथेलो बाद में आता है, फिर किंग लियर आता है और फिर मैकबेथ आता है. हैमलेट सबसे पहले आता है और यहां पर आप देखिए किंग लियर पहले आ गया है और हैमलेट बाद में, इसलिए ये नहीं होगा. यहां पर किंग लियर पहले आया है और हैमलेट बाद में, इसलिए ये नहीं होगा. ऑप्शन बी और डी का ही कंफ्यूजन है. मच आडू अबाउट नथिंग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है. ट्रायलस एंड क्रेसिडा शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ द प्लेस में से है. राइट, लास्ट फेज ऑफ द प्लेस में ट्रायलस एंड क्रेसिडा है और मच आडू अबाउट नथिंग कॉमेडी है जो उनके फर्स्ट फेज की कॉमेडी है. राइट, फर्स्ट फेज की कॉमेडी है मच आडू अबाउट नथिंग. राइट, और उसके बाद हैमलेट, फिर किंग लियर, फिर ट्रायलस एंड क्रेसिडा. राइट आंसर इज बी. बिल्कुल जरूरत नहीं है नूरी आंसर बदलने की. आंसर बदलने वाले लोगों का नाम मुझे बहुत अच्छे से पता है, कौन आंसर बदलता है, और बदलना भी चाहिए. गलत हुआ है तो बदलोगे ना, तभी तो सही होगा. मच आडू अबाउट नथिंग, फिर हैमलेट, फिर किंग लियर, फिर ट्रायलस एंड क्रेसिडा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. I had a sister whom the blind waves and surges have devoured. Who speaks the above lines? The line is from 12th Night. And the subtitle of the play, The 12th Night, was What You Will. And the line was spoken by Sebastian. Sebastian was the brother of Viola. Sebastian was the brother of Viola. Viola was the sister जिसके लिए वो बोल रहा है
I had the sister whom the blind waves and such have devoured. Right answer to the question is D. सेबास्टियन. इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना सपना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. Like Cordelia, the fool in King Lear is killed by Goneril's troops, referred to by Lear as a child, disliked by Regan and Cornwall, punished for not telling the truth. बताइए आंसर. Like Cordelia, the fool in King Lear. गुड इवनिंग सर्वेश जी. जय श्री राम. लेट मत आया करिए, छूट जाता है आपका क्वेश्चन. Like Cordelia, the fool in King Lear was killed by Goneril's troops, referred to by Lear as a child, disliked by Regan and Cornwall, punished for not telling the truth. शाबाश. बुशरा, यस्मीन, रिंकी, नूरी, शिब्बू जी, नीरज, संजीत जायसवाल, शाबाश. दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, एक आंसर बी और एक आंसर डी. जी, रीता राज, आगम रॉयल, वेरी नाइस, वेल डन. कम ऑन कम ऑन, वेयर आर अदर्स. कुछ के आंसर्स तो ऊपर चले गए ना, कोई बात नहीं. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका नहीं है फिरोज, ज्योति का भी नहीं है, सर्वेश का इसका राइट आंसर है. ये है फूल वॉज रेफर्ड टू as his child, as King Lear's child. This is the right answer. And do you know, Fool is the wisest character in King Lear. Fool is the wisest character in King Lear. सबसे wise character है, and he was not punished for telling the truth. Right? He was punished for not telling the truth. This is the incorrect statement. He was not disliked by Regan and Cornwall. But like Cordelia, the fool in King Lear is referred to by Lear as a child. Lear उसको अपना child declare करता है, और इसका यही करेक्ट आंसर है. आंसर इसका क्या है? बी है. आंसर फटाफट चेंज कर लो. कुछ लोगों ने चेंज भी कर लिया है ना. फटाफट आंसर चेंज कर लीजिए. राइट आंसर इज कि किंग लियर थिंक्स दैट कॉर्डेलिया एंड फूल आर हिज चाइल्ड, आर हिज चिल्ड्रेन. दोनों उसके बच्चे हैं, इक्वली ट्रीट करता है दोनों को. क्लियर? नया क्वेश्चन आ गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following was not one of the university wits? Which of the following was not one of the university wits? Robert Greene, William Shakespeare, George Peele, and Thomas Kidd. 4 options are here. कौन नहीं है यूनिवर्सिटी विट्स? शाबाश. प्रियंका शर्मा, अजय मिश्रा, श्वेता, सुबोध, फिरोज, बुशरा, पर्णा, नूरी, तारिका. वेरी गुड. धर्मपाल, सर्वेश, शिबू, कविता, प्रतिभा, आगम, रीता, पूजा, ज्योति, हेमलता, रजनी, बुशरा, शालिनी यादव, आरती, निषाद, नीरज कुमार, रिंकी देवी. वेरी गुड. शेक्सपियर वॉज नॉट द यूनिवर्सिटी विट, बट शेक्सपियर के प्रीडिसेसर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स. शेक्सपियर लर्नड द आर्ट ऑफ ड्रामा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स से उन्होंने आर्ट ऑफ ड्रामा ही सीखा है. राइट? शेक्सपियर इज नॉट द यूनिवर्सिटी विट्स इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Identify the character from the given hints. Read the question and give the answer. क्वेश्चन ठीक से नहीं देखोगे तो पेपर में क्या होगा? अगर आप ठीक से क्वेश्चन नहीं देखोगे तो पेपर में कैसे करोगे क्वेश्चन? बताओ, आपको तो ठीक से क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर में ठीक से आंसर करना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बनाए रखिए। सावधानी जहां घटी तुरंत गए काम से। Your face is as a book where men may read strange matters. To beguile this time, look like the time. Bear welcome in your eye, your hand, your tongue. Look like the innocent flower, but be the serpent under it. Right? Lady Macbeth का statement है ये, and the character referred here is Macbeth. Right? The referred character is Macbeth and the statement was made by Lady Macbeth. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से करेक्टर का रेफरेंस है ये, और वो करेक्टर है मैकबेथ। राइट आंसर इज डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here two blanks are given. The formalist critic, here you have to fill the name, mocked the character based criticism of. Character based criticism किसका है? उसका नाम यहां भरना है। By posing a famous question, how many children had Lady Macbeth? Which one is the right option? The formalist critic F.R. Lewis भी है, क्लिंथ ब्रुक्स, मॉनरो बियर्सले, एलसी नाइट्स, ये दोनों तो न्यू क्रिटिक है, फॉर्मलिस्ट नहीं है। फॉर्मलिस्ट तो एलसी नाइट्स और F.R. लिविस का नाम आप रख सकते हो। और किसने कहा है इस सेंटेंस को? तो ये फॉर्मलिस्ट क्रिटिक जो है यहां पर वो एलसी नाइट है। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक इज एलसी नाइट्स एंड करेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म किसने किया है? करेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म वाज डन बाय AC ब्रैडले। यही थोड़ी देर पहले आपको बताया था, करेक्टर बेस्ड क्रिटिसिज्म AC ब्रैडले का है। तो यहां पर जो आंसर है वो डी है। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? दिस इज द नेम ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड बाय LC नाइट्स। LC नाइट्स का एक लेक्चर है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी Macbeth. All right, LC Knights. Next question. Question number 13. A 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and concluding couplet is not known as. Question number 13. फरहीन खान, फिरोज खान, कविता सुबोध, प्रतिभा सपना, सर्वेश। जी पढ़िए फटाफट, फटाफट पढ़िए। आगम, सर्वेश, रजनी, नीरज, आरती, धर्मपाल, बुशरा, यास्मीन, हेमलता, पर्णा, श्वेता, शालिनी, शाबाश, रीता, वेरी नाइस। सबका सही है ना? 14-line poem, obviously it is a sonnet, and you know that there are several types of sonnets, but basically there are two: Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. Shakespearean sonnet was developed by
Sir Henry Howard, Earl of Surrey. Earl of Surrey developed the sonnet. He modified the Petrarchan sonnet and made it English. That's why the sonnet developed by Sir Henry Howard is called English sonnet. Shakespeare was the best practitioner, इसलिए this is also known as Shakespearean sonnet. And Shakespeare lived in the age of Queen Elizabeth. That's why it is also known as Elizabethan sonnet. So Elizabethan sonnet, Shakespearean sonnet and English sonnet are all same. Petrarchan is different. Petrarchan is different because Petrarchan is not divided into a quatrain, right? Petrarchan is divided into octave and sestet, not in 3 quatrains, right? 3 quatrains में divide नहीं होता. Petrarchan is divided into octave, first 8 lines, and then sestet, the remaining 6 lines, with the rhyme scheme ABBA, ABBA, and then CDC, CDC, and sometimes CDE, CDE. While Shakespearean sonnet, Elizabethan sonnet, they have the rhyme scheme ABAB, first quatrain, CDCD, second quatrain, EFEF, third quatrain, and GG, this is the couplet. ये Elizabethan sonnet, Shakespearean sonnet and English sonnet है. And English sonnet, Shakespearean sonnet and Elizabethan sonnet has one more variation जिसको आप Spenserian sonnet कहते हो. Spenserian sonnet is also divided into 3 quatrains and a concluding couplet, but variation वहां पर interlinking stanzas का है, interlinked quatrain का है. वहां पर राइम स्कीम चेंज होकर के बन जाती है ए बी ए बी, बी सी, सी डी and the final couplet EE. This is Spenserian. Alright, and this is Elizabethan, Shakespearean or English. Correct? कोई confusion हो तो बताओ. Any doubt, any query? कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए. Everything is okay तो बताइए. Yes, Petrarchan is also known as Italian sonnet. प्रोसीड किया जाए पक्का. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. In Shakespeare's time, who owned the rights to a theatrical script? Theatrical script means drama. Plays that were written, theatrical script. And the question is, who owned the rights to the theatrical script? Copyright किसके पास होता था? Theatrical script का. Playwrights के पास, patron of the acting company, the printer or the acting company, right? And everybody knows the answer to this question. जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट है सबको इसका आंसर पता है, किसी का गलत नहीं होगा. आई गारंटी कोई गलत नहीं करेगा. फटाफट आंसर कर दीजिए. सबके आंसर्स देख रहा हूं मैं. सारे लोग फटाफट आंसर करिए. जिसका गलत होगा उसी का नाम ले लूंगा मैं. फिलहाल सबका सही है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर मनुस्क्रिप्ट का जो होता था ठेका वो थिएट्रिकल कंपनीज के पास होता था, ना कि प्रिंटर के पास, ना कि ड्रामाटिस्ट के पास. वंस द प्ले वाज रिटेन, नाउ द एंटायर ओनरशिप वाज विद द थिएट्रिकल कंपनी, विद द एक्टिंग कंपनी. And that's why the 2 co-actors of Shakespeare, Hemming and Condell, brought out Shakespeare's plays
in 1623 under the title फर्स्ट फोलियो। राइट, फर्स्ट फोलियो एक्टर्स ने पब्लिश कराया था, ना कि प्रिंटर या पैट्रन ने। क्लियर? तो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the modern plays by a British playwright actually puts Shakespeare as a character on stage? ये क्वेश्चन है। In which of the given plays Shakespeare is a character? शेक्सपियर ही एक कैरेक्टर है। इनमें से किस प्ले में? एडवर्ड बॉन्ग्स विंगो, हरोल्ड पिंटर्स माउंटेन लैंग्वेज, टेरेंस रैटिंगन्स इंस्पेक्टर कॉल्स and Joe Orton's Lute, in which play Shakespeare appears as a character? जी, अजय मिश्रा, सपना, फरहीन, श्वेता, बुशरा, सत्येंद्र, कविता, अपर्णा, सुबोध, प्रतिभा, रिंकी, नूरी, धर्मपाल, प्रियंका शर्मा, रीता राज। वेरी नाइस, शाबाश, सर्वेश सिंह, आरती निषाद। देखिएगा आज क्लास के लास्ट में जाकर के कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सही क्या, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, यही देखिएगा बस। और फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं बता दूंगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज एडवर्ड बिंगो। राइट, एडवर्ड बिंगो, वेयर शेक्सपियर अपीयर्स एज अ कैरेक्टर। ये सब आपकी क्लास के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अभी तो ट्रेलर हुआ है अजय भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है। इन हिज व्यूज ऑन द डेथ ऑफ कॉर्डेलिया इन किंग लियर, which is the ground not specifically cited by Samuel Johnson. Samuel Johnson was a great admirer and critic of William Shakespeare, and King Lear is the most debated, most critically acclaimed play by William Shakespeare. And the ending of King Lear was changed during the Restoration period by Nahum Tate, and it was converted into a happy ending. And for a century the happy ending was in fashion, और फिर उसको बाद में चेंज करके ट्रेजिक एंडिंग में कर दिया गया था। तो देयर आर फ्यू रीजंस गिवन बाय मिस्टर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और इसमें से वो कौन सा रीजन है? राइट, विच इज द ग्राउंड नॉट स्पेसिफिकली साइटेड बाय सैमुअल जॉनसन, जिसको सैमुअल जॉनसन ने साइट नहीं किया है। It is contrary to the natural idea of justice. This is very true. Cordelia dies without any cause, without any mistake, without any hamartia. फालतू में मर जाती है यार, तो कुछ करते भी नहीं है, बस मर दी जाती है। तो ये पोएटिक जस्टिस के खिलाफ, नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट था। And it is contrary to Neoplatonic idea of decorum. It is contrary to the hope of the reader, or it is contrary to the faith of the chronicles. और आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने आंसर डी के साथ गए हैं, और ये डी का आंसर जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पे जो राइट आंसर है, इट इज कंट्ररी टू दी नियोप्लेटोनिक आइडिया ऑफ डिकरम। बाकी ये तीन ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और ये पूछा है कौन सा नॉट स्पेसिफिकली साइटेड, और वो नॉट स्पेसिफिकली साइटेड जो है वो आंसर है बी। राइट, क्लियर करिएगा। देखिए एक बार आपने गलत आंसर दिया है और उसको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है। जहां पर आपका आंसर गलत हो जाए, जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, उस क्वेश्चन को तुरंत मार्क करिए, उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए
और जैसे क्लास ओवर हो फिर उस क्वेश्चन पर काम करने की जरूरत होती है। आप चैनल पर आंसर बदल दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है, आप कुछ भी आंसर देते रहिए, कितनी भी बार बदलते रहिए, बट मैं ये चाहता हूं ना कि जो आज गलत हुआ वो जिंदगी में कभी भी गलत ना हो, वो दोबारा कभी गलत ना हो। और वो कैसे गलत नहीं होगा, वो ऐसे ही गलत नहीं होगा जब आप एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च करोगे, जो गलत हुआ उस पर काम करोगे, उस पर वर्क करोगे, फिर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अभी भी एग्जामिनेशन में 25 डेज है, अभी से सुधारना शुरू कर दीजिए, राइट। एक एक चीजें सुधारना शुरू कर दीजिए। टारगेट इज स्टिल अचीवेबल, डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट टाइम, एक भी मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करिए। और अगर अभी आप अब भी टाइम वेस्ट करोगे ना तो फिर ईश्वर भी आपसे नाराज हो जाएगा, और अगर वो नाराज हो गया ना तो फिर आपको दुनिया में कोई खुश नहीं रख सकता, इसलिए उसको नाराज नहीं करना है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शे निशा विहान जी बहुत पीछे चल रही हैं, आप क्वेश्चन नंबर 13 पर हैं और हम क्वेश्चन नंबर 16 पर हैं। आप लाइव बटन प्रेस करिए जहां पे लाइव दिख रहा है, देन यू विल कम टू अस डायरेक्टली, आप वहां पर पहुंच जाओगे। और कितने हैं आप में से ऐसे जिन्होंने अभी तक चैनल शेयर नहीं किया है, ऑनेस्टली बताइएगा, और बताइएगा नहीं ऑनेस्टली शेयर कर दीजिए, अभी तक आप शेयर नहीं किए हो, है ना। करिए फटाफट शेयर और फिर अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हो, जितने भी आपके पास दोस्त हो, सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबकी नौकरी एक साथ लगे और फिर आप सब एक साथ तनख्वाह पाना शुरू करें और एक साथ पार्टी करना भी, और एक साथ रिटायरमेंट का भी प्लान कर लें। दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देयर फ्रेंड्स। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब लीजिए, अरे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो रोज यहाँ पर मिलिए, कहाँ मुझे ढूंढेंगे आप, कहाँ किराया भाड़ा खर्च करेंगे, और उससे भी जरूरी समय खर्च करेंगे तो आप मेरे पास आएंगे। आप जहां हैं वहीं रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़ते रहिए, खूब वीडियोस देखते रहिए। सिलेक्शन जब हो जाएगा ना तब आप आइएगा, जब सरकारी पैसे का किराया हो, खैर तो वो पैसा फिर अपना ही लगना शुरू होगा। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको नीड हो मेरे से, जो भी हेल्प हो, आप डायरेक्टली बोलिए मुझसे, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। The first instance of female cross dressing with the disconcerting nuances of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare occurs in. The first instance of female cross-dressing with the disconcerting nuances of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in dramatic world of Shakespeare occurs in. Shakespeare के टाइम पे girls, women were not allowed to take part, right? In play they were not actors. In fact, little boys used to play the role of girls, और इसलिए they were not comfortable, और इसलिए शेक्सपियर used a device जिसको क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस कहा जाता है। And in cross dressing device the role of a girl was performed really by a boy. बॉय ही परफॉर्म करता था, बट उसको बॉय की तरह प्ले में भी दिखाया जाता है। और शेक्सपियरियन ओवियर में सबसे पहले ये आता है द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में। इसका आंसर है ए, राइट, इसका आंसर है ए। शशि दुबे आ गई है, नमस्ते मैडम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दिख रहा है ना? What is Johnson's opinion regarding the violation of the three unities in the plays of Shakespeare?
Johnson's opinion regarding the violation of the three unities in the plays of Shakespeare. Shakespeare should have followed three unities. Shakespeare followed the important unity of action satisfactorily. Shakespeare's plays suffered because they did not follow the unities. Unity of time and place arise from false assumptions. Which two statements are correct here? Statement number 2 and statement number 4. These two statements are quite correct. Second and fourth are correct. Actually, unity of action is the only unity that was discussed by Aristotle, and rest of the two unities, जिसको आप unity of time and unity of place कहते हो, they were attributed to attributed by the Italian and French critics, and Shakespeare followed unity of action satisfactorily, and the false unities were not followed by William Shakespeare according to Dr. Samuel Johnson. So here option number 2 and option number 4 are correct. So the answer is B. Question number 19. On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh Father, surely that is the Spirit. Lord, how it looks about." इसको देख करके मिरांडा कहती है, "ओ फादर, श्योरली दैट इज स्पिरिट." निश्चित रूप से ये स्पिरिट है. लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट, कैसा दिख रहा है. Who is that creature to whom Miranda sees and then expresses that he is a spirit? वो स्पिरिट है. कौन है वो स्पिरिट, ये बताना है. Which of the following Shakespearean plays are in correct chronological sequence? Once again, a question on chronology. The Merchant of Venice, Henry IV Part 1, Romeo and Juliet, Richard II. Chronology लगा दीजिए अब. यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइडिंग क्वेश्चन है. बताइए आंसर क्या होगा. राइट आंसर क्या होगा? Which of the following Shakespearean plays are in the correct chronological order? चार प्लेस दिए हैं. द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1. बताइए राइट आंसर. Which one is the right answer? Shabash, very good, very nice, well done. Come on, come on.
बस, चलिए शाबाश। चले आगे। मोस्ट वेलकम रजनी साहू। इस क्वेश्चन का आंसर एक आया है अभी तक जो करेक्ट था, और वो है डी, रोमियो एंड जूलियट पहले आता है, और रोमियो एंड जूलियट पहले आता है, फिर रिचर्ड सेकेंड आता है, फिर हेनरी फोर्थ आता है, और फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है। क्लास के बाद ईयर देखिएगा जा करके अपने अपने नोटबुक में कि आपने क्या बना रखा है। राइट आंसर इज डी। राइट, पूजा मौर्य, फरहीन और फिरोज खान, ये डी आंसर वाले लोग हैं। आंसर इज डी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The title of William Faulkner's novel The Sound and Fury derived from a play, एक प्ले से ली गई है। Life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। ये लाइन है उस प्ले की जहां से टाइटल ली गई है। अब वो प्ले किसका है ये सबको पता है। अच्छा, डिसलेक्सिया हो गया बी एंड डी का, शाबाश नेहा, वेरी नाइस। चलिए कोई नहीं, अभी डिसलेक्सिया कर लीजिए, पेपर में मत करिएगा बस। राइट, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, यही इसकी टाइटल है। और ये स्पीच कहाँ की है? मैकबेथ की है। और मैकबेथ किसने लिखा है? तो किसी को उस पर डाउट होगा तो सीधे सजाए मौत से नीचे कोई सजा उसके लिए भी नहीं है जो ये पूछ ले कि मैकबेथ किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी अपीयर्स इन टी.एस. एलियट्स। आई वॉज नो प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी। ना तो मैं हैमलेट हूं और ना तो मुझे होना था। ये लाइन कहां से ली गई है बताइए फटाफट, कहां से लाइन ली गई है? आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर आई एम नो प्रिंस हैमलेट। चलें प्रोसीड करें। The love song of J. Alfred Prufrock. Right answer is B. Next question. Which of the following plays was detested by Coleridge? Which of the following plays was detested, disliked by Coleridge? Coleridge को कौन सा प्ले पसंद नहीं था? राइट, सबको आंसर इसका पता है 23rd का। एवरीबडी नोज द आंसर। द डायनास्ट was a play by Thomas Hardy and Hardy belonged to
विक्टोरियन पीरियड, कॉलरिज इनके पहले ही आ गए थे। सैमसन अगोनिस्ट इज अ प्ले बाय मिल्टन, मर्डर इन द कैथेड्रल प्ले बाय टी.एस. एलियट, and Measure for Measure play by Shakespeare, and this play was hated by Coleridge. Right? This play was hated by Coleridge. Right answer is D. Next question. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. The author of these lines. When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उस पर भरोसा कर लेता हूं कि वो सही ही है। When my love swears that she is made of truth, जब भी वो कहती है कि she is made of truth, I do believe her, though I know that she lies. This line was written by none other than William Shakespeare, and this line occurred, these lines occur in one of his sonnets. उनके सोनेट की लाइन है, फरहीन ने बताया है कि सोनेट नंबर 138 की लाइन है। अच्छा, तो ये शेक्सपियर के सोनेट की लाइन है। सिडनी आंसर दे दिया है दिनेश चौधरी जी ने, जो कि ब्लेंडर उन्होंने कर दिया है। ये शेक्सपियर का स्टेटमेंट है, शेक्सपियर की लाइन है। राइट, सत्येंद्र कुमार जी आप भी सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन किंग लियर, which woman has Edmund as her lover? एडमंड किसका लवर है? कॉर्डिलिया का, गॉनरिल का, रीगन का, या फिर रीगन और गॉनरिल दोनों का? क्वेश्चन नंबर 25, आंसर इज डी। बोथ गॉनरिल एंड रीगन are in love with a single man, and that man is the villain of the play. And why only he is villain? Goneril and Regan are also villain. Husband of Regan is also villain. Right? There are multiple villains in the play King Lear. Next question. His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker, and about whom is this spoken? Right? About whom this is spoken, and who speaks? Enobarbus on Antony means the play is Antony and Cleopatra. Brutus on Caesar means the play is Julius Caesar. Cleopatra on Antony means the play is Antony and Cleopatra. And finally, Mark Antony on Caesar means the play is Julius Caesar. And right answer to the question is D. This was a speech made by Mark Antony during the funeral of Julius Caesar in the play Julius Caesar. जब फ्यूनरल हो रहा होता है जूलियस सीजर का, राइट, ही वॉज परमिटेड बाय ब्रूटस टू स्पीक। राइट, ब्रूटस को बोलने के लिए, ब्रूटस ने परमिट कर दिया था बोलने के लिए मार्क एंटनी को, और ये वही स्पीच है जिसने सब गड़बड़ कर दिया है ब्रूटस के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, the speech was made by Mark Antony on Julius Caesar. Right option is D. Next question.
अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजी बनाना है. दीज आर द हिस्टोरिकल इवेंट्स मेड द क्रोनोलॉजी. डेथ ऑफ शेक्सपियर, accession of James to English throne, Caxton and the printing press, the Norman conquest of English, Norman conquest of England. बनाइए क्रोनोलॉजी. डेथ ऑफ शेक्सपियर 1616, accession of James 1603, Caxton's printing press 1476, Norman conquest 4321. A is the right answer. Question number 27. Answer is A. All right. Next. Ripeness is all. Readiness is all. And now ripeness is all. Is the line from Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth. 4 tragedies are in option. Ripeness is all means maturity is everything, and the most immature character is King Lear. Most immature character is King Lear, and King Lear में ये लाइन आती है, ripeness is all, maturity is everything. One who is never ready makes the statement readiness is all, that is Hamlet, and one who is most immature makes the statement that ripeness is all. All right, so right answer to the question is King Lear. Next question, that is question number 29th. Sexual jealousy is a theme in Shakespeare's. Sexual jealousy is the theme in Shakespeare's which play? The Merchant of Venice, The Tempest, Othello or King Lear? Sexual jealousy. In which play? Very good. Sexual jealousy is the theme of Othello, and sexual possessiveness is the theme of A Midsummer Night's Dream. Right? Sexual possessiveness and sexual jealousy. And entire Othello is the play of jealousy. Right? Here the right answer is C. Sexual jealousy is the theme of Othello. Next. To the memory of my beloved, the author Mr. William Shakespeare, and what he hath left us, is an ode composed by. To the memory of my beloved author Mr. W. Shakespeare, and what he hath left us, it is an ode.
Right? It is an ode written by whom? Milton, Johnson, Andrew Marvell, or John Suckling. Who wrote this ode? Right? To the memory of my beloved, the author, Mr. William Shakespeare, and what he hath left us. This is an ode, and this ode was written by बेन जॉनसन. बेन जॉनसन ने उस ओड को लिखा है. एंड व्हेन शेक्सपियर्स प्लेस वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1623 अंडर द टाइटल फर्स्ट फोलियो, दिस ओड वाज एडेड एज अ प्रीफेस. इस ओड को प्रीफेस में ऐड किया गया था टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवेड ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर. एंड व्हेन द सेकंड फोलियो अपीयर्ड in 1633, then a poem by John Milton was added as a preface. Right? तो इसका जो आंसर है that is Ben Jonson. All right. Next question. Ben Jonson is the right answer. Question number 31st. Sexual possessiveness is the theme of Shakespeare's. Sexual possessiveness किसकी थीम है? इसका आंसर अभी आपको मैंने बता दिया कि सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. राइट? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में सेक्सुअल पजेसिवनेस है. और जस्ट याद करिए वो सीन इन द फॉरेस्ट वेयर पक ड्रॉप्स द मैजिक लिक्विड इन द आईज ऑफ हमिया डिमिट्रियस. राइट? सबके आंख में डाल देता है और वो मैजिक जो बनता है. राइट? इसीलिए वो मिड समर नाइट्स ड्रीम मैजिकल प्ले है वो शेक्सपियर का. राइट आंसर इज डी हियर. क्वेश्चन नंबर 31 का. नेक्स्ट. दिस इज अ कमेंट ऑन विलियम शेक्सपियर. His story requires Romans are kings, but he thinks only one man. Right? शेक्सपियर की स्टोरी में रोमन्स हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकते हैं, बट सोचता किसकी है वो? सोचता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के बारे में. दिस वॉज अ कमेंट मेड बाय वन ऑफ द क्रिटिक्स, one of the admirers of William Shakespeare, and here are the options: Ben Jonson, John Dryden, Dr. Samuel Johnson, and Matthew Arnold, who made this comment that Shakespeare's stories may require Romans or kings, but he thinks only one man. And that is the comment made by none other than the literary dictator Dr. Samuel Johnson. Right answer is C. Right? C is the right answer. Next question, that is question number 33rd. Who called Shakespeare the most largest and comprehensive soul? The largest and most comprehensive soul है शेक्सपियर के पास. Who made this statement? Dr. Johnson, John Dryden, T.S. Eliot, or I.A. Richards? Who made the statement that Shakespeare has the most comprehensive soul, largest and most comprehensive soul? ये किसका स्टेटमेंट है? बताइए फटाफट. लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये स्टेटमेंट है अबाउट शेक्सपियर बाय जॉन ड्राइडन. अबाउट शेक्सपियर बाय जॉन ड्राइडन ये कमेंट है. राइट? कि ही हैज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट comprehensive soul. All right. Right answer is John Dryden. Clear? Next question. Who wrote Shakespeare's Freedom? Many times this question has been repeated.
Shakespeare's Freedom is a book by Stephen Greenblatt, Stephen Spender, Louis Montrose, or Jacques Lacan. Who wrote the book Shakespeare's Freedom? Question number 34th. शाबाश, रामपुर वाली मैडम भी आ गई हैं. नमस्ते हुडा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है स्टीफन ग्रीनब्लैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन राइटर्स famously imagined the plight of Shakespeare's sister? चाकू खरीदने गई रही होंगी रामपुर वाली. Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? George Eliot, Virginia Woolf, Iris Murdoch, Frances Burney. Virginia Woolf talked about Shakespeare's sister Judith Shakespeare in her lecture A Room of One's Own. Right? Judith Shakespeare is an imaginary sister of William Shakespeare created by Virginia Woolf. और वर्जीनिया वुल्फ ने क्यों क्रिएट किया था? ये प्रूव करने के लिए कि had Shakespeare had a sister, she would not have become as successful as Shakespeare became. क्यों? Because she would not have been given the same opportunity जो शेक्सपियर को मिली थी, इसलिए वो फेल हो गई होती. और इसलिए राइट आंसर जो है वो क्या है? राइट आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ. एंड जूडिथ शेक्सपियर was the name of the imaginary sister of Shakespeare created by Virginia Woolf. Question number 36. Oh, thank you. I am always handsome. आप ही को पता नहीं कल मैं कैसे बुढ़ा लग रहा था, है ना? चलिए, read the following statements and the reason given for it. Choose the right response. Othello killed Desdemona. Statement number 1. Is this statement true? Yes. Othello killed Desdemona. This statement is true. All right. Next, reason जो दिया हुआ है, because Desdemona committed infidelity. Desdemona ने infidelity commit करी थी, इसलिए मारा है ना? चलो बताओ. हाँ, तो प्रोसेसर स्लो तभी होता है ना जब सिस्टम पुराना हो जाए. जितना सिस्टम पुराना होता है प्रोसेसर स्लो हो जाता है, मोबाइल स्लो हो जाता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, बोर्ड स्लो हो जाता है, आदमी स्लो हो जाता है. तो पुराने का मतलब तो यही है ना. मैं तो इतना ही समझ रहा था, आप कुछ और समझा रही हो तो अलग बात है. रुद्रेश राठौर जी 2 दिल लाए हैं और फिर रोते हुए भी आए हैं और फिर 2 नमस्ते और उसके साथ 2 आइसक्रीम भी. भाई क्या समझूं मैं? आप दुखी हैं कि आप खुशी हैं कि आप पार्टी कर रहे हैं? क्या क्या समझ लूं बताओ? ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, आंसर भी बता दीजिए. इसका आंसर जो है वो क्या है? ए एंड आर आर ट्रू. बोथ ए एंड आर आर ट्रू? बिल्कुल नहीं. ए एंड आर आर ट्रू? बिल्कुल नहीं. ओनली ए इज ट्रू. ए ट्रू है बट आर फॉल्स है. ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी है. ऑल राइट. आज नहीं हूं स्लो. चलो जवानी वापस आ गई. थैंक यू सो मच. 37th. Keep up your bright swords, for the dew will rust them. Good senior, you shall more command with ears
than with your weapons. The above lines are addressed by Othello. ओथेलो की लाइन है ये, और किसको एड्रेस किया है ओथेलो ने? दिस इज द क्वेश्चन. कीप अप योर ब्राइट swords for the dew will rust them. अपने तलवार को ब्राइट करके रखो, अदरवाइज जंग लग जाएगी. Dew will rust them. Good senior, you shall more command with years. आने वाले सालों में ना than your weapons, आपके आदेश से चीजें चलेंगी, आपके वेपन से नहीं. किसका स्टेटमेंट था? ओथेलो का है. किसके लिए है? ओथेलो का स्टेटमेंट था फॉर रोडरिगो, ब्रेवेंसियो एंड ऑफिसर्स. जब रोडरिगो और ब्रेवेंसियो आते हैं, इसलिए when Desdemona was abducted, when Desdemona married Othello, और ओथेलो को पता चलता है, then ओथेलो के पास रोडरिगो एंड ब्रेवेंसियो आते हैं carrying their sword, and then Othello makes this statement. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. रीता और नूरी हंस रही हैं मेरे ऊपर, है ना? चलो कोई नहीं, हंसते रहो, हंसते रहना चाहिए, किसी के भी ऊपर हंसते रहो. क्वेश्चन नंबर 38. What attributes of Shakespeare's characterization does Johnson admire in his preface to Shakespeare? 4 statements are given here, and what attributes of Shakespeare's characterization does Johnson admire in his preface to Shakespeare? Question number 38. राइट, जूम कर दें. अरे इतना बड़ा दिख रहा है यार, इतना बड़ा दिख रहा है, फिर भी जूम कर दें. अच्छा, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे हो तो हुडा के ऊपर हंस रहे होगे, है ना? अच्छा, 2 दिल और आइसक्रीम पे हंस रहे हो. हाँ, वो इतनी देर के लिए आते हैं, अब चले भी गए. अब थैंक यू प्रतिभा. राइट आंसर क्या इस क्वेश्चन का? द वे हिज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे द जनरल पैशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर वाज एडमायर्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. Arrange the following stages in a sequence in which all Shakespearean tragedies are structured. Use the code given below. Right here, once again you have to make the sequence. Sequence आपको बनाना है कि which event comes first. पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, उसके बाद क्या, और लास्ट में क्या. हाँ, दिल और आइसक्रीम देने आते हैं हमें. अरे हमारे पास तो बहुत बड़ा दिल है, किसी का भी आ सकता है. डेनुमा, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स. नंबर 1 पर क्या आता है? एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन कम्स फर्स्ट. नंबर 2 पर कॉन्फ्लिक्ट. नंबर 3 पर क्लाइमेक्स. नंबर 4 पर फॉलिंग एक्शन. नंबर 5 पर क्या आता है? नंबर 5 पर आता है डेनुमा, और फिर आता है रिजोल्यूशन. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है. और ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गुस्ताव फ्रेटैक्स पिरामिड. गुस्ताव फ्रेटैक्स पिरामिड. Exposition first, conflict second, climax third, denouement fourth. 1, exposition, conflict, climax, denouement. A is the right answer.
ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hamlet, lying wounded, says to his friend Horatio, I am dead. Right, Horatio, I am dead. This is the last statement of Hamlet in the play Hamlet. And Hamlet has not died yet. But बिना डेथ के ही वो बोल देता है होरेसियो आई एम डेड, और मरा नहीं है उसके पहले ही बोल दिया है होरेसियो आई एम डेड। तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोलैप्सिस। प्रो माने होता है बाद में, राइट, प्रो माने होता है बाद में, प्री माने होता है पहले। डेथ बाद में होगी, एंटीसिपेशन ही पहले हो रहा है, तो जो एंटीसिपेशन है उसको प्रोलैप्सिस बोलते हैं। राइट आंसर इज सी। क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज प्रोलैप्सिस। क्वेश्चन नंबर 41, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये कहां की लाइन है? Which Shakespearean play contains the line there is a special providence in the fall of a sparrow? स्पैरो के भी फॉल में विधाता का कुछ खास निर्णय होता है, उसका कुछ खास कारण होता है। क्या कारण होता है, कहां की लाइन है? किंग लियर, हैमलेट, कॉरियोलानस और मैकबेथ। अंकित त्रिपाठी, श्वेता, हुडा, बुशरा, रीता, फिरोज, नूरी, प्रतिभा, सपना, गीता, फरहीन, शशि, नूरी, सुबोध, धर्मपाल, सर्वेश, रमेश, सपना, रिंकी, प्रतिमा, वेरी गुड, नीरज, अपर्णा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी। हैमलेट की लाइन है ये, वी डिफाई augury. We defy augury. There is a special providence in the fall of a sparrow. This question was once asked in DSSSB PGT and once in UGCNET. There is a special providence in the fall of a sparrow. Hamlet की लाइन है ये, आंसर इस क्वेश्चन का है बी, and almost all of you have given the correct answer. Very pleasing. 42nd, शेक्सपियर्स सॉनेट्स। शेक्सपियर के सॉनेट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Do not carry a dedication, are dedicated to James I of England, are dedicated to Mary Arden, are dedicated to an unknown Mr. WH। ये किसी का गलत हो ही नहीं सकता। राइट आंसर इज डी, शेक्सपियर सॉनेट्स आर डेडिकेटेड टू Mr. WH। नेक्स्ट क्वेश्चन, the words if it were done, when it is done, then it were well, it were done quickly, if it were done, when it is done, then it were well, it were done quickly are uttered by Hamlet, Lear, Othello, Macbeth। 4 great tragedies and 4 are in options. Who made this statement? Question number 43rd, अजय मिश्रा जी का सारा जवाब अभी तक सही था। उन्होंने मुझसे कहा था
और ये जवाब हो गया है उनका गलत, और इसका राइट आंसर बाकी सब का करेक्ट है, ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है। राइट, जल्दी है तो जल्दी ही निपटा दो। मैकबेथ इज अ करेक्टर हु इज ऑलवेज इन अ हरी एंड हैमलेट इज अ करेक्टर हु इज नेवर इन अ हरी। इसलिए हैमलेट इज अपोजिट टू मैकबेथ। राइट, हैमलेट इज अपोजिट टू मैकबेथ। मैकबेथ इज अ मैन ऑफ एक्शन and Hamlet is a man of thought. Right, Hamlet is a man of inaction. ये बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है दोनों। लेडी मैकबेथ कहां से ले आए भाई? पूछा था अटर्ड बाई, तो जो ऑप्शन है उसी में से आपको करना था, है ना? तो ऑप्शन हो गया यहां पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में कि नहीं, ये बताओ। आर यू एंजॉइंग द क्वेश्चंस? आज सारे क्वेश्चंस जो है एक पर्टिकुलर राइटर पर है, सारे क्वेश्चंस ऑन विलियम शेक्सपियर, और इससे ये क्लियर हो जाएगा कि विलियम शेक्सपियर पर कुछ भी आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। आज विलियम शेक्सपियर पर पार्ट 1 है, कल विलियम शेक्सपियर पर पार्ट 2 होगा। राइट, आज पार्ट 1 है and today I have around 75 questions, around 75 questions है, सबको कंप्लीट आज करना है, और इतने ही अराउंड कल भी होने वाले हैं, कल उनको करेंगे। and once you do 150 questions on Shakespeare, then I don't think that कुछ ऐसा भी आ सकता है जो आपके रीच से बाहर हो, आपकी एक्सेस से बाहर हो। कोई सा भी एग्जाम हो, EMRS का हो, EVS का हो, जी हाँ NVS का हो, या TGT PGT का हो, किसी का भी हो। इसका आंसर क्या है सही? इसका आंसर सही है बी। राइट, फ्रांसिस बेकन कहां से आंसर आ गया भैया? स्टीलिंग हरसेल्फ टू द मर्डर, लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन टू अनसेक्स मी हियर। राइट, लेडी मैकबेथ कॉल्स अनसेक्स मी हियर। Whom does she call? This is the question. And she calls the spirits of hell. She calls the spirits of hell to unsex here. This is the question. B is the answer. आज तो मैंने ग्रामर की एक वीडियो डाली थी, देखा कि नहीं? ग्रामर की एक वीडियो आज मैंने छोटी सी डाली थी, करीब 45-50 मिनट्स की। मजा आया उसमें कि नहीं सपना? अरे वाह, मैंने 5G फोन ले लिया सर, नेटवर्क प्रॉब्लम अब नहीं हो रही है। अरे बधाई हो नूरी, मिठाई मेरी भिजवा देना 5G फोन की। सऊदी अरब से मंगवाया कि इंडिया से ही लिया है? जैसे हुडा तो सारे फोन कुवैत से मंगाती है। नहीं, कुवैत से नहीं, कहां से भूल गया, एम्स्टर्डम से। तुमने कहां से मंगवाया है? Who among the following gave a happy ending to King Lear? Who among the following gave a happy ending to King Lear? King Lear को हैप्पी एंडिंग किसने दिया है? देखा था, कुछ समझ में आया कि नहीं? यास्मीन भी ली है? अरे अजय भाई को बड़ा पता है। Who among the following gave a happy ending to King Lear? James Quinn, Noam Tate, Peg Woffington और चार्ल्स मैकलिन। मुझे तो अजय मिश्रा ने प्रॉमिस किया है उनकी नौकरी लग जाएगी जैसे वो मुझको आईफोन गिफ्ट करेंगे। मुझे तो फोन गिफ्ट में ही मिलता है, मेरे पास कभी पैसे ही नहीं होते कि मैं फोन खरीद लूं। आज तक तो जितने फोन लिए हैं ना, लिए ही नहीं है, इनफैक्ट सारे फोन मिले ही हैं। तो अगला नंबर जो है आप अजय मिश्रा का है ना, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। राइट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर? हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर किसने दिया था? नाहम टेट ने 1681 में। अरे बहुत महंगा है मैडम, तो तुम्हारे लिए कौन सा मुझे गिफ्ट कर रही हो? 46. Which one of the following characters in Shakespeare's Tempest
इज एसोसिएटेड विद द अर्थ, अर्थ से एसोसिएटेड कैरेक्टर कौन है? बस तैयार रहिए, जल्दी नंबर आने वाला है। फोन पुराना भी हो रहा है ना मेरा, तुम्हारा तो सिलेक्शन कराना ही पड़ेगा। मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट करूंगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। वाह, थैंक यू सपना। कोई स्पेशल है क्या? अच्छा, दुबई में सस्ता है? अरे वहीं से एक मंगा दो यार। अर्थ से रिलेटेड कैरेक्टर कालीबान है और एयर से रिलेटेड कैरेक्टर एरियल है। प्रॉस्पेरो इज द मैजिकल कैरेक्टर, राइट? ही स्टडीज ओनली बुक्स ऑफ मैजिक। तो एरियल जो है वो एरी है और अर्थली जो कैरेक्टर है वो कैलिबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह अजय सर आईफोन लेटेस्ट मॉडल लीजिएगा, मैं भी पार्टिसिपेट कर लूंगी। वाह, विच ऑफ दीज प्लेस बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस? क्रॉस ड्रेसिंग आपको पता है, क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब when a female, when a woman wears the dress of a male, this is called cross dressing, right? हाँ प्रियंका, श्योर, राइट? पुराना वाला आईफोन आपको दे दूंगा, श्योर। चलो, which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing? That is Julius Caesar. In Julius Caesar there is no cross dressing. Next question, 48th. John Dryden in his heroic tragedy All for Love takes the story of Shakespeare's which play? बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, आप लोगों का आंख बंद करके आंसर लगाने वाला है, राइट? जॉन ड्राइडन इन हिज प्ले ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? ट्रायलस एंड क्रेसिडा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी एंड क्लेपाट्रा, मेजर फॉर मेजर। कहां से लिया है आप? एंटनी एंड क्लेपाट्रा की री राइटिंग है ऑल फॉर लव। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th. इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम? पुअर टॉम की वॉइस में कौन बोलता है किंग लियर में? In King Lear, who among the following speaks in the voice of poor Tom? Kent, Edgar, Edmund, Gloucester. बोलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 49। अजय, सुबोध, सपना, रीता, इजी लर्निंग विद दिव्या, धर्मपाल, हुडा, रमेश, अपर्णा, रिंकी देवी, गीता कनौजिया, सर्वेश, श्वेता, फिरोज, शशि, नूरी, सारिका, वेरी नाइस, नीरज कुमार, राइट? एडगर चेंज्ड हिज गाइज, अपना ड्रेस चेंज कर लेता है इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ एज वेल एज हिज फादर ग्लॉस्टर फ्रॉम एडमंड हु वाज हिज इलेजिटिमेट ब्रदर, और वो अपना नाम रख लेता है Tom, right? And he speaks, Edgar speaks in the voice of poor Tom. Right answer is B. Question number 50th. 50. If you cannot understand an argument and remark, it's great to me you are quoting. Right, this was the question even asked yesterday. क्या आंसर है इसका? It's Greek to me you are quoting Julius Caesar and you are quoting William Shakespeare. Question number 50, answer is C, William Shakespeare. It's Greek to me means I am unable to understand. 51st. Which of the following plays of William Shakespeare is not directly referred to
in T.S. Eliot's The Wasteland? बड़ी जल्दी सर्वेस नाइस कर दिए. Which of the following plays of William Shakespeare is not directly referred to in T.S. Eliot's Wasteland? क्या आंसर इसका? कल का ही क्वेश्चन है ये, 51st, and it is King Lear. That is not directly mentioned in the play, in the poem King Lear. In the poem The Wasteland. What vision does Macbeth have before he kills Duncan? What vision does Macbeth have before he kills Duncan? Macbeth kills Duncan in Act 2 of the play Macbeth, and before he kills Duncan, he had a vision. And what was the vision? He sees a floating head urging him to spill blood. He sees the bloody axe lodged in Duncan's brow. He sees the floating dagger pointing him to Duncan's chamber, or he sees a pale maiden weeping in the moonlight. Question number 53rd. Right, Macbeth had a vision before he kills Duncan, and the vision was he sees the floating dagger. He sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. This is the right answer. कौन सा छूट गया भाई? अरे 50 सेकेंड तो नंबर ही गायब हो गया है. चलो कोई बात नहीं. Match the following phrases with the characters. Right? I hope the day before yesterday or even yesterday you did this question. Now it is again for EMRS special, guys. Motiveless malignity, reason in madness, supt full of horrors, to be or not to be, to be or not to be Hamlet, supt full of horror Macbeth, reason in madness Lear, and motiveless malignity Iago. All right. How many children had Lady Macbeth? कितने थे Lady Macbeth के children? How many children had Lady Macbeth is not mentioned in the play. Right? ये play में mention नहीं है. And the question is, how many children had Lady Macbeth is what? The title of lecture delivered by Elsie Knights, an essay by Thomas De Quincey, a lecture delivered by William Hazlitt, a part of Coleridge's characters of Shakespeare's plays. Right? It was the name of a lecture delivered by Elsie Knights. Answer is A, question number 56. Falstaff. Falstaff is a character in Henry IV Part 1, The Merry Wives of Windsor, The Comedy of Errors, Titus Andronicus, and he appears in more than one play. He appears in more than one play, or these are the options in which two plays Mr. Falstaff appear. First, he appears in the play Henry IV Part 1, and then on the request of Queen Elizabeth, Mr. Shakespeare wrote the play Merry Wives of Windsor. और क्या रिक्वेस्ट थी एलिजाबेथ की? एलिजाबेथ वांटेड टू सी फाल्स्टाफ एज अ कॉमिक कैरेक्टर, और इसलिए कॉमिक कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करना था शेक्सपियर को फाल्स्टाफ को, और शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया किसमें? मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर में. सो ऑप्शन
Where A and B are correct, and that is option A. All right, next question. 57th. To see him act is like reading Shakespeare by flashes of lightning. This is the comment by Samuel Taylor Coleridge. To see him act is like reading Shakespeare by flashes of lightning. About which Shakespearean actor Coleridge wrote the above line? वो कौन सा शेक्सपियरियन एक्टर है जिसके लिए कॉलरिज ने इस लाइन को लिखा था? To see him act is like reading Shakespeare. बोलिए आंसर. क्वेश्चन नंबर 57. To see him act is like reading Shakespeare by flashes of lightning. Right? Question number 57. आंसर क्या है बताइए. सर्वेश, सपना, रमेश, धर्मपाल, प्रियंका, नूरी. रमेश सर ईयरफोन सही नहीं होगा. अरे सबका 5G थोड़ा ही ना है. गीता कनौजिया, नीरज. और आंसर है इस क्वेश्चन का Edmund Kean. Edmund Kean. Right? To see him act is like reading Shakespeare by flashes of lightning. Right? This statement was made by Coleridge on Edmund Kean. Edmund Kean was a romantic actor, right, who used to play the role of William Shakespeare's heroes. Right? Or to see him act was like reading a book. Right, reading Shakespeare by flashes of lightning. Question number 58. What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? माइक्रोसेकेंड का आंसर है ये. माइक्रोसेकेंड का क्वेश्चन है. राइम स्कीम क्या है शेक्सपियरियन सोनेट की? ए बी, सी डी, ई एफ और जी जी. सी. क्वेश्चन नंबर 59. द फैमिली शेक्सपियर वॉज रिटन बाय. शुरुआत इसी क्वेश्चन से हुई थी ना? नहीं, सेकेंड क्वेश्चन था ये. अच्छा, उनको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है तो ये उनकी ही फॉल्ट है. मैं जरा देख लूं अपना माइक. हाँ, अभी 1 पॉइंट बैटरी है, आप तक तो चली जाएगा. द फैमिली शेक्सपियर वॉज रिटन बाय. सोनू कहाँ थे अभी तक? मैरी लैम, चार्ल्स लैम, थॉमस बाउडलो. राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 60. In Shakespeare's Macbeth, who was untimely ripped from his mother's womb? Witches ने प्रोफेसी क्या की थी? Witches की प्रोफेसी ये थी कि nobody born out of a woman can kill Macbeth, and unless the wood of Birnam starts moving, Macbeth will not be killed. ये दो प्रोफेसी हुई थी. Finally, Macbeth was killed by someone who was untimely ripped, who was not naturally born. और वो unnatural born बंदा जो है जिसने Macbeth को मारा है, his name was Macduff. Right? Macduff killed Macbeth, and after the death of Macbeth, Malcolm became the king of Scotland. Right answer is B. Next question, 61st. Beastie is the clown. No doubt he is a clown. But in which play
Twelfth Night, As You Like It, The Taming of the Shrew, Much Ado About Nothing. किसमें है वो? यम्मी तुबरेज. Feisty is the clown in which play? Feisty is the clown in Twelfth Night और As You Like It. किसमें है वो? As You Like It में जो फूल है उसका नाम क्या है? Feisty appears in Twelfth Night. Right? Feisty appears in Twelfth Night. इतनी बात तो पक्का है. बट मेरा क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फूल हु अपीयर्स इन एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट में जो अपीयर करता है उसका नाम क्या है? उस फूल का नाम क्या है? एज यू लाइक इट का जो फूल है उसका नाम है टच स्टोन. राइट? टच स्टोन उसका नाम है. और किंगलियर में जो फूल आता है उसका नाम ही फूल है. राइट? किंगलियर का फूल फूल है. एज यू लाइक इट का फूल है टच स्टोन. ट्वेल्थ नाइट का फूल है feisty. नेक्स्ट 62nd. All the world's stage and all the men and women merely players occurs in Shakespeare's As You Like It. Which character speaks these lines? बोलता कौन है इस लाइन को? जैक, सीलिया, रोजालिंड और टचस्टन. है ना? कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन शेक्सपियर से आते हैं. इसका आंसर है जैक. राइट? जैक इज द कैरेक्टर हु इज द मोस्ट फिलोसॉफिक इन द प्ले एज यू लाइक इट. राइट? आई एम Anindita. Anindita. Then why Yummy Tubrage if you are Anindita? Next question, 63rd. What is honor? A word. What is that word honor? Air. A trim reckoning. Who hath it? He that died of Wednesday. Does he feel it? No. Does he hear it? No. It is insensible. Then, yeah, to the dead. But will it not live with the living? No. Why? Detraction will not suffer it. Therefore, I will none of it. Honor is mere escutcheon. And so ends my catechism. Which character in the following Shakespeare's dramas made this statement about honor? इस प्ले में ऑनर पर यह कमेंट किया गया है और किसने किया है? बोलिए, व्हाट इज ऑनर? ऑनर के बारे में एक लंबी चौड़ी स्पीच है और किस करेक्टर की स्पीच है ये क्वेश्चन है. ऑनर पर स्पीच है ये फाल्स्टाफ की. राइट? फाल्स्टाफ की स्पीच है ऑन ऑनर in the play Henry IV Part 1. B is the right answer. Which one of the following correctly describes the meaning of Macbeth's words? Life is but a walking shadow. Life is but a walking shadow is a dialogue, is a speech, soliloquy by Macbeth. And what is the meaning of the line life is but a walking shadow? Life is just devoid of light.
लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ सब्सटेंस, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ स्पिरिट, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ स्टेबिलिटी। क्या मीनिंग है? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ और नहीं, सिर्फ हमारी परछाई है, और परछाई भी वो है जो हमेशा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, साथ कोई नहीं देता जिंदगी में। जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, एक दिन आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। जिंदगी कुछ और नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है, इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं है। इट मीन्स लाइफ हैज नो वैल्यू, लाइफ इज डिवाइड ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई मतलब नहीं है लाइफ का। दिस इज द राइट आंसर बी। नो मतलब, कोई मतलब नहीं है लाइफ का। ये शेक्सपियर की फिलॉसफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले other than Julius Caesar has Shakespeare depicted the Romans better than the Roman writers themselves have done? बताओ। क्या मस्त रिवीजन है। यू आर यूनिक सर। थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर कमेंट्स। Question number 65th. In which play other than Julius Caesar has Shakespeare depicted the Romans better than the Roman writers themselves have? शेक्सपियर रोमन राइटर्स से बेहतर रोमन्स को पोर्ट्रे करते हैं जूलियस सीजर के अलावा इस प्ले में। राइट, देखिए इस बार थोड़ा सा गलती होने लगी ना। वो प्ले है कोरियोलानस। राइट आंसर इज बी हियर। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस। जूलियस सीजर यहां पर पहले ही दे दिया है कि जूलियस सीजर को छोड़ करके, अब जूलियस सीजर को छोड़ करके बचे दो, कोरियोलानस एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज नॉट इन द ऑप्शन, तो जो ऑप्शन है वही तो टिक करेंगे ना, कोरियोलानस। रोमियो जूलियट में रोमन कोई नहीं है। रोमियो एंड जूलियट द प्ले सेट इन वेरोना, नॉट इन रोम। पता है कि नहीं? वेरोना में सेट है रोमियो एंड जूलियट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। Who of the following are being talked about in the following lines? किसकी बात यहां पर हो रही है? You seem to misunderstand me. गलत समझ रहे हो तुम मुझे। By each at once her choppy finger laying upon her skinny lips, you should be women, and yet your beards forbid me to interpret that you are so. तुम्हें महिला होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी जो बियर्ड है ना, ये मुझे समझने नहीं दे रही है कि तुम कौन हो। Who of the following are being talked about? The plebeians in Coriolanus, the sisters in King Lear, the witches in Macbeth, the players in Hamlet. Who is being referred here? सर्वेश, फिरोज, हुजा, नूरी, रीता, शाबाश, प्रियंका, कमान, नीरज, शिबू, इजी लर्निंग विद दिव्या, गीता कनौजिया, रमेश यादव, श्वेता त्रिपाठी, शशि दुबे, धर्मपाल। बाकी लोग लग रहा है कि डिनर के लिए जल्दी थी, चले गए हैं। रिंकी जी, लेडी मैकबेथ ने नहीं बोला था, ये बोला तो मैकबेथ ने था। और किसको बोला था? विचेस को बोला था, बिकॉज विचेस के बियर्ड है और वो समझ नहीं पा रहा है, और इसीलिए कह रहा है यू सीम टू मिसअंडरस्टैंड मी बाय ईच एट वन हर चॉपी फिंगर्स
laying upon her skinny lips, you should be women, and yet your beards forbid me to interpret that you are so. Right? The witches in Macbeth are being referred here. The right answer is C. Next. Which of the following statements best describes T.S. Eliot's assertion that Shakespeare's Hamlet is an artistic failure? Shakespeare's Hamlet is an artistic failure. Which of the following statements best describes his idea? नेटवर्क चल रहा है तो बार बार एडवर्टीजमेंट ही आ रहा है. नेटवर्क नहीं चलता था देखो तो कोई ऐड नहीं आता था. Hamlet's emotion is not adequately objectified, इसलिए artistic failure है. Hamlet's feelings far outweigh the release of his emotions. Hamlet's obsession should have been within representational limit. Hamlet's indecisiveness slows the steady progress of action. Right? Because Hamlet is an objective artistic failure, because it isn't have objective correlative. This one is the right answer, A. Right? His emotion is not adequately objectified. Next question, that is 68th. Who says the following lines and to whom? If it be aught toward the general good, set honor in one eye and death in the other, and I will look on both indifferently. अगर ऑनर और डेथ में चूज करना हो तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को चूज कर लूंगा. कौन बोलता है ये और किसको? ऑक्टेवियस टू एंटनी, हैमलेट टू क्लैडियस, ब्रूटस टू कैसियस, कैस्का टू कल्परनिया. Question number 68. Brutus to Cassius. Next, which of the following characters in Shakespeare's Love's Labour Last overuses former Latinate diction? Right? Former कौन सा वो करेक्टर है who overuses Latin words in the play Love's Labour Lost? Latinite phrase excessively use करता है which character? This is the question. Holofernes, dull, custard, or moth? Question number 69th. Noori Khan, Easy Learning with Divya, Huda, Sarvesh, Ajay, Firoz, Shweta, Ramesh, Sonu, Dharampal, Rita, Shashi. Shabas. Right answer is A. Neeraj Kumar, Subodh Kumar, Geeta Kanojia. Right answer to the question is A. Priyanka Sharma, Ankita Tripathi. Holofernes is the right answer. Holofernes is the character who appears in the play Love's Labour Lost, and he uses excessively Latin phrase. Latin phrase को वही excessive use करता है. Right answer to the question is A. Question number 69. Then question number 70. Read and answer. Which two of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance? To be or not to be? To be or not to be is
one of the most popular soliloquies of Shakespeare, and it appears in Hamlet. And the statement to be or not to be has two connotations, और आपको आंसर फाइंड आउट करना है. Hamlet is choosing between life and death, between action and emotion, between affirmation and confirmation, between doing and abstaining from doing. किसको चूज कर रहा है वो? Hamlet, between life and death and between doing and abstaining. Answer is A. All right. Next question, 71st. A poet laureate said, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of English language as I. पोएट लॉरिएट है वो, और कहता है कि शेक्सपियर के बाद अगर कोई दूसरा मास्टर है इंग्लिश लैंग्वेज का तो वो मैं हूं. Who is the poet? Stephen Spender, John Dryden, Alfred Lord Tennyson and Ted Hughes, and all the four were poet laureates. All the four were poet laureates, and who made this statement, या who declared himself linguistically as powerful as Shakespeare was, and it was Mr. John Dryden. ना नहीं, Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson declared that I do not think that since Shakespeare there has been such a master of English language as I. Right answer to the question is C. All right. Next. Venus and Adonis is a long narrative poem. By whom? समझ लीजिए, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, और इतना सिंपल इसलिए है क्योंकि आखिरी वाला किसी का गलत ना हो, है ना. पॉजिटिव माइंड्स के साथ जाएं, पॉजिटिव माइंड्स के साथ गुड नाइट करें, पॉजिटिव माइंड्स के साथ कल की तैयारी करें, और कल फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और वो कुछ और क्वेश्चंस वंस अगेन विलियम शेक्सपियर पर होंगे. ऑलराइट, आज जितने भी आपने शेक्सपियर पे क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 72, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे UGC नेट के क्वेश्चंस हैं. सारे के सारे UGC नेट के क्वेश्चंस हैं. शुरुआत में नहीं बताया था कि आप कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे, बट टुडे यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ UGC नेट, जो क्वेश्चंस शेक्सपियर पर बेस्ड थे. टुमारो यू विल हैव totally new questions on William Shakespeare created and prepared by me. मैं उनको तैयार करूंगा. कल देखिएगा, असली परीक्षा आपकी होगी कि कल आपके कितने सही जाते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं टुमारो विद अ पॉजिटिव नोट. गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.